Today we're going to study the section of light. We're going to start it at least. Let's do a little bit of recap. Last lectures में हमने waves की properties पढ़ी थी. Okay, let me go a little bit more back. Okay, हमने पढ़ा था waves क्या होते हैं? They transfer energy and information, but they do not transfer matter. और wave की हमने कुछ properties पढ़ी थी. We went through a few terms, and then we studied two types of waves, longitudinal and transverse waves. Longitudinal or transverse waves में difference क्या है? The difference is between the direction of motion of particles. आपकी wave propagation is always forward, or it can be backwards as well. When your particles are vibrating parallel to the direction of wave propagation, that's longitudinal waves. और जब direction of motion perpendicular होता है vibrations के, तो you have transverse waves. Now, the main part that I want to revise is this one. कि हमने पढ़ा था a wave can undergo reflection, refraction, and diffraction. We precisely went through all three phenomena one by one, but today we're going to do it in a little bit more detail. आज हमने reflection और refraction को थोड़ा detail में पढ़ना है. जब आपके पास एक surface है और ray bounce back हो जाती है उस surface से, that's reflection. और जब wave bend हो जाती है, that's refraction. और जब wave या फिर आपकी जो ray है, जब वो spread होती है, that's diffraction. Now, in this section of light, let's start with reflection. Reflection होता क्या है? It's when a ray bounces off from a surface. या फिर bounces back from a boundary. Okay, let's say आपके पास ये एक boundary है. It can be a mirror. Okay, let's say ये mirror की surface है. Okay, अगर एक ray आती है like that and it hits the surface, जो ray आगे hit करती है उसको हम कहते हैं incident ray. अब ये ray bounce back होगी, right? जब ये ray bounce back हो जाती है like that, same ray, when it bounces back, then we call it the reflected wave ray, क्योंकि वो reflect हो गई है. So this is the reflected ray. अब हम इस boundary से एक dotted line extend करते हैं 90 degrees पर. Like that. Make sure it's perpendicular to the boundary. इसको हम कहते हैं normal. अब normal और incident ray के दरमियान जो angle होता है उसको हम कहते हैं angle of incidence. We use lowercase I for that. So this I is angle of incidence. और normal और reflected ray के दरमियान में जो angle होता है उसको हम कहते हैं angle of reflection. Lowercase r.
Okay, now the law of reflection says that this angle of incidence is equal to the angle of reflection. In other words, जब आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सिर्फ तब हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रही है. Okay, this is very important. All right, next we're going to do an investigation for reflection. ये जो next investigation वाला part है, it's usually applicable in the practical paper, ATP, investigating reflection. बहुत easy है, आप इसको lab में भी कर सकते हैं to strengthen your concepts. इसमें आपने पहले I will try to summarize the process and then I'll write the points for you guys to learn them if you want. आप करते क्या हैं, आप एक white sheet of paper लेते हैं. Okay, why a white sheet of paper? ताकि आपको आप जो lines draw करेंगे या फिर आपका जो equipment है वो आपको अच्छे तरीके से नजर आ सके. So you take a white sheet of paper. Okay, and then you take a ray box. I'm just gonna draw boxes here because I'm not good with 3D drawing. So you take a ray box. और आप एक mirror लेंगे, plain mirror. Plain. And then of course you need a pencil. आप करेंगे क्या, आप इस ray box को on करेंगे तो इसमें से एक ray निकलेगी, right? Like that. और जब वो mirror की surface पे touch करेगी तो वो bounce back होगी, वो reflect होगी. You will see a ray going like that. So you turn your ray box on and a ray is incident on this mirror surface and then it's reflected back. आप क्या करेंगे, आप अपनी पेंसिल से इस रे को ट्रेस कर लेंगे, एक रूलर और पेंसिल से इस रे को ट्रेस कर लेंगे. ओके, जब आपने रे को ट्रेस कर लिया तो आपने एक और काम करना है कि जहाँ पे आपने मिरर रखा है वहाँ पे आपने एक लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है, जब आप ताकि जब आप मिरर को रिमूव करेंगे तो आपके पास एक मार्क प्रेजेंट हो कि मिरर कहाँ पे पड़ा हुआ था. ओके, अच्छा, पहले आपने अपना रे बॉक्स ऑन किया, उसमें से एक रे निकलेगी, वो मिरर को हिट करेगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. Then what you're gonna do is take a pencil and a ruler and trace this ray. फिर आपने जब ट्रेस कर लिया तो आप अपना रे बॉक्स ऑफ कर दें. And then I'm just gonna copy this here. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अपना मिरर भी रिमूव कर सकते हैं or you can just turn your ray box off. Wait. Okay.
I'm going to color code this black. ताकि we can differentiate that we have traced this ray. You can remove the ray box as well. You don't need it anymore. अच्छा, अब आपने अपने mirror की surface को भी trace कर लिया हुआ है, अपनी ray को भी trace कर लिया हुआ है. Now what you're gonna do is draw a line here that is perpendicular, a dotted line that's perpendicular to the traced mirror surface. फिर आपने एक protractor से, this thing that looks like this in your geometry box, and it has like readings for different angles, protractor. उससे आपने क्या करना है, आपने ये वाला एंगल भी मेजर करना है और ये वाला एंगल भी मेजर करना है. This is your angle of incidence and this is your angle of reflection. And you will observe कि आपका angle of incidence equal है angle of reflection के. And this confirms that reflection has taken place. Okay, so you have demonstrated experimentally कि आपके इस phenomena में reflection हुई है क्योंकि आपका angle of incidence equal है angle of reflection के. Alright, so this was the experiment like conceptually. Now I'm gonna write down the points. अगर आपने paper में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपके variables क्या हैं? In variables, you have two things. You have dependent variables and independent variables. I'll tell you what that is as well. Independent variable and dependent variable. अच्छा, जब भी आप experiment करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप change करते हैं, okay? And as a result of that, आपका outcome change होता है. जैसे कि अब जब आपने ये ray box लिया था, आप इस ray box को इस तरह भी रख सकते थे, या you could like put it a little bit here, and your ray could have been projected here. तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाता. आप कंट्रोल कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ओके? अपनी रे बॉक्स की पोजीशन चेंज करने से, अगर आप रे बॉक्स यहाँ पे रखते और रे ऐसे उस पर मिरर को हिट करती तो नॉर्मल ये था, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता और उसके रिजल्ट से आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता, राइट? आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं? आप कंट्रोल कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खुद चेंज हो रहा है, ओके? जो आप कंट्रोल कर रहे हैं that is independent variable, okay? The thing that we are controlling and the thing that we are changing, basically not controlling, I think the better word would be the thing that we are changing is the independent variable, और उसके रिजल्ट से, उसकी वजह से जो चीज़ चेंज होती है, that's your dependent variable. For example, angle of reflection depend करता है angle of incidence पर, और वो angle of incidence आपके under है, right? So the independent variable is the angle of incidence here, I, और dependent variable क्या है? Angle of reflection R. अच्छा, जो चीज़ें change होती हैं, they are variables. The word variable in English itself means something that changes, right? और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने same रखनी होती हैं ताकि आपका experiment fair हो. And those things are called control variables. Control करना होता है आपने इनको, like same रखना होता है. Control variables. Okay. अब control variables आपकी क्या हैं? You can list 1 to 2 control variables, जैसे कि distance of ray box from the mirror. या फिर width of the light beam. Width of light beam. इसका मतलब है, अच्छा, why are we doing this in the first place? You might be thinking. हम
कर क्या रहे हैं हम? रिफ्लेक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम देखते हैं कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके, अपने एक्सपेरिमेंट को फेयर रखने के लिए मेक श्योर कि आपका जो रे बॉक्स है उसका डिस्टेंस मिरर से सेम है। अगर एक एक्सपेरिमेंट में आप इस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को या फिर रे को, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपका रे बॉक्स की पोजीशन डिस्टेंस उतना ही होनी चाहिए और आपका सॉरी लेट मी ड्रॉ समथिंग एल्स। सो आपका रे बॉक्स इधर ही होना चाहिए और लेट्स से आपकी रे अब इस तरह जा रही है। ओके, सो द रे, द डायरेक्शन ऑफ द रे कैन चेंज जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है रे बॉक्स का वो सेम रहना चाहिए मिरर से। ओके, नेक्स्ट, विड्थ ऑफ द लाइट बीम। व्हाई डज दैट मैटर? कि अगर आपकी लाइट बीम की विड्थ लेट्स से बहुत ज़्यादा है, विड्थ क्या कहते हैं उसकी थिकनेस को। लेट्स से एक आपकी रे की थिकनेस ये है और दूसरी रे की थिकनेस ये है। अच्छा, अब जब आपने पेंसिल से इसको ट्रेस करना है तो जितनी थिन होगी उतनी प्रिसाइज आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में अगर आप अपनी लाइन ऊपर ड्रॉ करते हैं या इधर ड्रॉ कर दें, राइट, that will not be accurate enough. You will have to draw the line somewhere closer to the center here to make it accurate. And because we're humans, human error भी आ सकता है, इसलिए जितना आपकी रे thin होगी उतना accurate आप उसको draw कर सकते हैं. So the point here is that the width of the light beam needs to be the same when you're replicating that experiment. One more thing that you can ensure to control is the frequency or wavelength of the light. Frequency or wavelength of light. Okay, all right, so these are your variables. Independent variable, angle of incidence, dependent variable, angle of reflection, and control variables are these three. You should know at least two of them. Okay, now if you have to write down the method, there are several steps to it. You can draw this diagram like this, okay? And you can say that set up the apparatus as shown in this diagram, and you just have to write the steps that I've explained it to. I'm not going to write all of them. What I'm going to do is say it out for you guys, and if you want, you can write it down in your notes. So, place your ray box on the side and a plain mirror on the white paper. Turn the ray box on and let the beam be reflected from the mirror. Okay? Then trace the beam of light and also mark the position of the placement of the mirror. Then turn the ray box off and remove it to have more space on the paper. Remove the mirror as well to have more space on the paper. And then use a protractor to measure the angle of incidence and the angle of reflection. Repeat this experiment about 3 times with the beam of light aimed at different angles, okay? Different angle of incidence and reflection. Record the results in a table, और इस टेबल में एक हेडिंग होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपने नोट क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका होगा वो रिफ्लेक्शन के इक्वल है या फिर करीब करीब है, ओके? So the analysis of the result will show that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. And if the experiment is carried out correctly, then these angles
should be the same, okay, or at least very close to each other. And that confirms the um, law of reflection. Okay, that was the methodology. कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. The first one is errors. जब आपने अपना ये paper 5 में, I think it's paper 5 if I'm not wrong, or paper 4, ATP जो है उसका, I forgot the number, but जो ATP है उसमें आपने ये सब चीजें लिखनी है one by one, okay? And so errors are also important. आपके पास two types के errors होते हैं. एक systematic error होता है जो आपके system में error होता है, या फिर आपके apparatus में, equipment में error होता है, और दूसरे random error होते हैं जो कि experiment के conduction में introduce होते हैं, like human error, etc. So systematic errors में क्या क्या आ सकता है कि आपका mirror distorted है, like mirror ही खराब आपने choose कर लिया, mirror distorted, okay. और random errors में क्या आ सकता है कि your pencil was not sharp enough, उससे जो आपने beams, जो rays draw की थी वो accurately draw नहीं हुई. So make sure you use a sharp pencil. Use a sharp pencil. And also make sure that the protractor that you're using has a high resolution. Use a sharp pencil and high resolution protractor. Okay, next you have the safety measures that you should take. Safety considerations. So since you're handling a ray box that is projecting beams of rays, make sure you handle it carefully. Handle ray box carefully. And make sure you don't accidentally project the rays in your eye or someone else's eye. So basically avoid looking directly at the light and stand behind the ray box during the experiment. Don't stand in front of the ray box for the light to be reflected into your eye or someone else's eye. Also, make sure you keep all liquids away from the electrical equipment and the paper to avoid any inconvenience. And make sure you take care of the mirror. Don't break the mirror. That won't be an ideal situation in a lab. Okay, so that was it for reflection. And hopefully in the next class we will do refraction.